फिर से लिए चलते हैं दोहा, जहां पर अफगान अमन मुज़ाकरात की तकरीब जारी है। अफगान सदर खिताब कर रहे हैं। National dialogue with the tradition of Loy Jirga adapted as a mechanism of national discussion and consensus building. Our demographic profile, with 75% under 30, makes the country one of the young people. Our women, creative, dynamic, and strong, think and speak for themselves. We've become a true stakeholder society, discussing peace vigorously. Our inclusive, productive public discussion has turned the interrelated notions of constitution, republic, citizenship, and freedoms and rights into keywords in our social discourse and narrative of our collective identity as Afghans today. During the historic 2018 ceasefire, our society demonstrated the capacity for embracing the future, engaging tens of thousands of Taliban fighters in conversation, without a single incident of abuse, revenge, or violence. Our societal capacity for peace, tolerance, and forgiveness comes from our abiding belief in the injections of Islam. Our ulama have been champions of peace and our rights and freedoms. The alignment of views between the ulama and the women in the dialogue with Taliban has been truly inspiring. Our ulama created the enabling conditions for the 2018 ceasefire when 2,907 of them issued a fatwa urging peace and ceasefire. I therefore quickly ordered a ceasefire. The Taliban accepted. Thereby, we had a true feast celebrating the end of the month of Ramadan in 2018. Our private sector is engaged vigorously in peace. Today, they provide the necessary goods to every single district of Afghanistan. In 1990, people had to stand in line for hours, get a liter of petrol or some wheat or flour. We have demonstrated our political will and state capacity. The past 2 months, we embarked on an intense process of consultation with our defense forces, civilian leadership, and critical groups of stakeholders, responding to the directions from their commander-in-chief. Our patriotic forces changed their posture from war to reduction of violence within 5 days. We have organized our civilian capacity in all provinces equally swiftly. Relentless focus on reforms and a culture of acceptance of civilian leadership has been the key to building the capacity of the security sector. Defying predictions that the NDSF will not be able to fill the vacuum left by the departure of over 125,000 ISAF forces in full assumption of security by ourselves, we've gone from strength to strength, and thank you for the resolute support mission, and I salute General Miller and the previous commanders. NDSF's strength, functioning as the protector of our constitutional order and protector of the rights and obligations of their fellow citizens, gives us the confidence to pursue sustainable peace. Your ongoing support to the NDSF, Dr. Esper, Mr. Stoltenberg, during peace and war are essential to our freedom and your security. Our brave women are inclusively serving along the men in the NDSF. Peace has been an integral component of our vision and program of action for securing the future of our country as an effective state, unified nation, and prosperous country. End of 40 years of violence is the primary objective of our society. Peace is the process for achieving this objective, a process that would not lead to the stated objective and merely change the scale and scope of violence is therefore not likely to receive strong public support. Given the stated divergence between the Taliban and us
we need to agree to a fair and transparent process for reaching agreement and convergence. We are confident that we have a national consensus on peace. Our confidence derives from 5 years of intense consultation. The ulama, women and youth have convened national-level gatherings of stakeholders giving expression to their hopes and fears. The Consultative Peace Loijirga of 2019 brought all the stakeholders into a national forum. The 23 recommendations of the Loijirga have provided a platform for peace. Reaching here is required commitment and sacrifice of the NDSF, compassion for the suffering of every Afghan, conviction that the war must end politically, and to act on the conviction to opt for the road less traveled when reaching a fork in the road. A president, however, does not have the freedom of a citizen. A president has to act within the limits set by the Constitution, the source of his authority, hence assessing all recommendations to compliance with the Constitution, on the price of peace and the trade-offs. In the course of negotiation, the trade-offs and the price will become clear. The nation will then have to make a decision through the parliament, a Loijirga, or a referendum. Every Afghan citizen is a stakeholder in the peace process. To ensure inclusiveness, we will engage in an intensive round of consultation in the next 7 days on how to balance effectiveness, inclusion, authority, and capabilities. I would like to thank President Trump for his stewardship of the South Asia strategy and for engaging. के सदर अशरफ गनी काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान सदर अशरफ गनी काबुल में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना था कि अमन मुआहिदे के बाद अफगान नेटो अमेरिका के दरमियान मुआहिदे काबिल अमल रहेंगे। एक जानिब दोहा में आज अमन मुआहिदा हो रहा है, जो तालिबान हैं उनके और अमरीकी अफवाज के माबैन आज मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज उस पर दस्तखत होंगे। याद रहे कि अफगान सदर अशरफ गनी को इस मामले से अलहदा रखा गया। अशरफ गनी आज काबुल में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनका यह कहना है कि अमरीका अफगान मुश्तरका एलामिया मुल्क में पायदार अमन का बायस बनेगा। अमरीका और नेटो फोर्सेस की अफगान फौज की मदद काबिल तहसीन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का इन्हसार तालिबान की जानिब से मुआहिदे की शराइत पर अमल और वादे पूरे करने पर है। अफगानिस्तान की मौजूदा नस्ल ने आने वाले अफगान बच्चों के लिए कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी काबुल में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस वक्त ये बराह रास्त आप मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल एस ऑस्टिन मिलर भी यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि आपने दिफाई तौर पर जो अफगानिस्तानी अफवाज की मदद की, हम उस पर आपके मशकूर हैं। एक जानिब दोहा में आज 50 ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हैं। अफगान तालिबान और अमरीका के माबैन आज मुज़ाकरात के हतमी शराइत व ज़वाबित पर दस्तखत होने वाले हैं। तो इसी पूरे मामले से अमरीका ने अफगान सदर अशरफ गनी को दूर रखा है और अशरफ गनी इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और काबुल में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए यह कहना था कि 2 दहाइयों से अफगानिस्तान के 1 करोड़ अफराद ने नकल मकानी की है और अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसकी शराइत व ज़वाबित और उस पर तालिबान के अमल दरामद पर ही आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि अमरीकी तालिबान अमन मुआहिदे की तमाम दफात से मशरूत है। मुआहिदा अफगान तालिबान और अमरीकी हुकाम में मुज़ाकरात के नतीजे में होने जा रहा है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान और दीगर बरादर ममालिक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए अमन मुआहिदा होने जा रहा है। मुआहिदे में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी वजीर दिफा का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में काबुल में इस वक्त अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनका यह कहना था कि मुआहिदा खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहद जरूरी है और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अमरीका के इस मुआहिदे की अफगान हुकूमत जो है वो हिमायत करती है। तालीम, सेहत और दिफाई हिमायत पर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त दोहा में तकरीब जारी है। वजीर खारजा जो कतर के हैं वो इस वक्त तकरीब का आगाज कर रहे हैं।
women and men in order to build the future of the coming generations in this noble country. The state of Qatar has taken the initiative of hosting the Afghan Dialogue Conference last year, which laid the first cornerstone of a larger and more comprehensive community dialogue for the different stakeholders in the Afghan dossier. And we look forward to completing this operation in order to crown this agreement with comprehensive and sustainable peace in the near future, God willing. The state of Qatar was and still is sure of the lack of feasibility of any